Dear students, today we will going to learn land, soil, water, natural vegetation and wildlife. It is the chapter of your geography. In this lesson, you will learn about these resources, what are the uses of these resources, how we save these resources. Day by day, you see that these resources get degraded, and now our duty is how we save these resources because these resources are precious, because these resources are God given gifts. These are God given gift for human beings. But unfortunately, we have degraded these resources. So far this lesson is concerned, there are various resources, but in this lesson, especially, we will read about land, soil, water, natural vegetation, and wildlife. So far, the resources concern something which is usable by human beings, something which is usable by human beings, or you can say, in other words, things which satisfy human need. तम चीज यम इंसान सन जरूरियात पूर करन, we called it as a resource. Think yourself, land is a land is a resource or not? Your answer will be land is a resource, land is a precious resource, land is a natural resource. And you see that 95% requirements we get from land. 95% requirements met from the land. 5% yim tes requirements chasa, yim tes zuriyat chasa, we get from the land. We get from what you in Kashmiri called as zameen. Zameen per chi hasil kara is. Gold each zameen tal hasil kara, iron each zameen tal hasil kara. This is one precious things. Prat kan cheez zameen tal hasil kara. So in this sense, we say that land is precious natural resource. Land is a precious natural resource, God given gift resource for human beings. And you see it, land, uses of land. Land is used for settlement. बसां छे इस कुन जाए या रोजां छे इस कुन जाए या मकान बनावा छ कुन जाए सेटलमेंट ये छे इस लैंड से पेट बनावा आयरस मंसने इस बनावा कि गो की लैंड इज यूज्ड फॉर सेटलमेंट uses of land. Now another you see land is used for agriculture, cultivation of crops, rearing of animals. ये कहां पर हम करते हैं? लैंड पर करते हैं. ऑफ एग्रीकल्चर करते हो, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हो या रियरिंग ऑफ एनिमल्स करते हो, ऑफ ये ऑफ लैंड पर करते हो. आप कहां रहते हो? लैंड पर. तो इसके बाद फैक्ट्रीज आप देखते हैं, मशीन्स आप देखते हैं, इंडस्ट्रीज आप देखते हैं, ये सब लैंड पर है. इसके बाद आप ट्रांसपोर्ट देखते हैं, दे आर रनिंग बट वायर ऑन लैंड. क्योंकि लैंड इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. More than
6 billion people live on land. And if we wholly and solely, we can say that land is the most precious thing. And if we consider our land, there are 70% area which is underwater, and 30% is only which you called as land. On this 30%, if we consider, this is not same throughout. Yeh chhuneh hiyui asan same. Yus ye toy 30% land wuchu toy, yeh chhuneh same asan prat kun jay. Throughout the world chhuneh same kin, ya agar is panis areas kun nazar demo, throughout the area, throughout the world yeh chhuneh same kin. There are mountains, there are lakes, there are mountains, there are hills, there are plains, there are plateaus. Land same throughout the king. Land kun kun jay pahadi asan, kun jay baki plain asan, kun jay forest area asan. Go ki land same throughout asan king. You see land अगर इस इस्तेमाल उसका तो करो, यूज ऑफ लैंड, अगर कं लैंड इस इस्तेमाल करो इज determined by so many factors. Use land ये कत खतर इस्तेमाल करो, किम खतर करो, there are so many factors responsible for. अगर इस वुचो गोडथ यस यह लैंड युस अस इस्तेमाल करन यह लैंड छा फिट फॉर दैट, अच्छा टेम्परेचर तुथ यम खतर यह अगर अस कम करन आस तो सह टेम्परेचर छा अत जाए, या अच्छा असल सॉइल जन आस क्रॉप वोवन अस वुचन सॉइल छा अत असल, क्लाइमेट छा अत असल, अत नेरना मिनरल्स बाकी चीज, or you can say that अत मज availability of water. अगर कस फैक्ट्री आस बनावनी, इंडस्ट्री आस लैंडस पे बनावनी, सह वुच अच्छा availability of letters, availability of what you can say water. As I early told you that land distribution throughout the world is not same, it is uneven. There are some places which are mountains, there are some places which are plains, there are some places which are folded mountain areas. As I have already told you, and use of land is determined by so many factors. Land वारिया आसान पत पर लैंड वुचान कुन जाए गसान अस कह कर, फॉर इंस्टेंस क्रॉप वो कुन लैंडस पे अस वुचन कि लैंड छा ठीक अत क्रॉप्स खतर, अच्छा टेम्परेचर तुथ यम सती क्रॉप खस, या तुह वुचान अत मज अच्छा सॉइल छा असल, यह सह सॉइल यथ मज क्रॉप हेको कर, क्लाइमेट छा ते, या वन जन इंडस्ट्री कुन जाए बनाव, कुन जाए सेटअप कर इंडस्ट्री, अस वुचन कि अच्छा वाटर अवेलेबल, लैंड छा वारिया वास्ट अवेलेबल. गो कि you see use of land is determined by temperature, soil, climate, minerals, availability of water, etc. etc. अगर इस इंडिया वुचो, इंडिया 57% लैंड अंडर एग्रीकल्चर, इंडिया 50% 7% लैंड एग्रीकल्चर. लैंड वारिया टाइप,
We can say private land where individual is owner of it. Private land या यात मज कस individual या खुद दयो individual या त्रेयो या खुद ज्यादा individual या एक individual आस्य एक individual सुंद आस्य या दोन individual सुंद आस्य where individual is owner of it इमं मालिक individual आस्य यानी मकान छे बनावा पन्ने जमीनस मज गो कि अस तम जमीनक मालिक सच जमीन आस तमिक जमीनक ओनर इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट लैंड या कंस बनाओ फैक्ट्री पन्ने जमीनस मज इट इज प्राइवेट लैंड अमुक मालिक इंडिविजुअल आसान या बे कह चीज बनाओ कम्युनिटी लैंड इज यूज्ड बाय कम्युनिटी फॉर वेरियस पर्पसेस कम्युनिटी लैंड गो सह लैंड यथ यूस कम्युनिटी इस्तेमाल करान तुम वुचा पब्लिक पार्क्स यह इंडिविजुअल कर इस्तेमाल कह कम्युनिटी इस्तेमाल करान या फ्रूट मंडी यह इंडिविजुअल कर इस्तेमाल कह यह कम्युनिटी इस्तेमाल करान गो प्राइवेट लैंड यह अकिस इंडिविजुअल सुंद अमुक मालिक इंडिविजुअल अक खुद ज्यादा हेकन कम्युनिटी लैंड गो यूस यह मालिक कह अक सुंद ओनर यह कम्युनिटी खतर Now, my dear students, this land is the precious natural resource, but day by day population increases. More and more population increase day by day. Population increase, but land is limited. Population bada, land is limited. Remote areas मज forests cut down करन. Cities मज तुम वुचान बज बज बिल्डिंग बनान बड़े बड़े होटल बनान रेस्टोरेंट बनान लैंड अत खतर ज्यादा कर इस्तेमाल मगर अगर यी कोर कंस्ट्रक्शन खतर कोर ज्यादा या बाकी चीजन खतर ज्यादा गो कि अम सत नुकसान वी आल्सो नीड एग्रीकल्चर फॉर फीडिंग अवर फैमिली फॉर फीडिंग अवर फ्यूचर जनरेशन तेल तमिश गस प्रॉब्लम गो कि टू मच एवरीथिंग इज बैड अगर लैंड ज्यादा लैंड करन काम इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने खतर फर्नीचर बनाने खतर या बाकी चीज बनाने खतर अख वक्त तुम वुचान आज मैक्सिमम लूक करान काम आम बिल्डिंग बनावान बिल्डिंग्स बनावान बाकी बाकी कंस्ट्रक्शन बेसिस करान सारी कायल बनामत यानी एग्रीकल्चर या मेहनत लगान क्रॉप कल्टिवेशन या बाकी चीज सह आज कहीं करान आज सारी दपान कंस्ट्रक्शन करो दुकान दह पंद्रह बनावो अम पत दिमोक दुकान कनोक दुकान कनोक अम सत करो आराम कम्फर्ट लाइफ इस्तेमाल हो तो मेहनत करान बाकी चीज करान मगर एट ए वन टाइम ही माय डियर स्टूडेंट्स एट वन टाइम ही के अस गस एग्रीकल्चर जबरदस्त प्रॉब्लम युस कंस्ट्रक्शन पर्पस करान बिल्डिंग्स बनावान होटल्स बनावान रेस्टोरेंट्स बनावान या शॉप्स बनावान अम सत बनान बासान पन लाइफ कम्फर्ट क्या एग्रीकल्चर या बाकी पर्पस तथ मज मेहनत लगान वन मगर टाइम यी कि दपो कि लैंड गि क्रॉप मैलो कह जमीन क्रॉप जमीन गि एवेलेबल गत क्रॉप आसो ववान सह तिस पे एवेलेबल कह बे करो फेस प्रॉब्लम्स बे करो फेस प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स अम पत वन बह तुम बे चीज कि लैंड लैंड सोन अत मज कह फैक्टर्स यम सोन लैंड खराब करान एमअपोर यम सन जमीन खराब करान इस पर डिफॉरेस्टेशन करान कटिंग ऑफ ट्रीज करान
کیازکہِ یِم پلانٹن ہٕنٛدۍ یا ٹریٖزن ہٕنٛدۍ موٗل ٲسۍ یِم ٲسۍ زٔمیٖنس فِکس تھاوان بنٛد تھاوان ٹایٹ رٹان یِژ پھِر أسۍ کٹنگ آف ٹریٖز کران چھِ امہِ سۭتۍ چھِ زٔمیٖن گژھان لوٗز تمہِ سۭتۍ تہِ چھِ سٲن لینڈ گژھان یعنی میٚژ ہسا چھِ ژلان میٚژ ہسا چھِ گژھان سویل اِروجن یہِ ہسا چھِ ژلان نیٖرِتھ اوور گریزنگ آف لینڈ باے شیٖپ اینڈ گوٹ شیٖپن ہٮ۪تھ تہٕ گوٹن ہٮ۪تھ اگر اوور گریزنگ کرو أکسٕے جایہِ کرو اوور گریزنگ یعنی أکسٕے جایہِ اکھ گوٚو کُنہِ ساتہٕ اکہِ پھِرِ یا پتہٕ 10 دۄہ یا ریٚتۍ باد پتہٕ گریزنگ کرو تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ اگر أسۍ پٮ۪ٹھن پٮ۪ٹھ اوور گریزنگ کرناوو أکسٕے جایہِ تمہِ سۭتۍ تہِ چھِ لینڈ گژھان یعنی سویل اِروجن گژھان چھِ یا لینڈ اِروجن تُہۍ چھِو ونان یا یِژ پھِر تیز ہوا چھِ یِوان تمہِ سۭتۍ تہِ چھِ لینڈ اِروجن گژھان یا یِژ پھِر تیز بٲرِش تہِ چھِ یِوان تمہِ سۭتۍ تہِ چھِ لینڈ اِروجن گژھان Now our duty is we have to conserve these natural resources. We have to conserve this resource. We have to conserve this resource carefully without wastage. We have to save our land. We save our land by so many factors. We should not cut down trees and plants. We can save land. Overgrazing of cattle, we should not have to do this. Thus, by this we can save our land. Construction purposes, more and more construction purposes to make more and more houses, to make more and more buildings, to make more and more restaurants and hotels and shops. We should avoid this. By this we can save our land. And overpopulation is another factor. Control on overpopulation is another measure by which we can save our land. Okay, my dear student, thank you.